अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंग्लिश विद राहील सर। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोइम है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। लिखा है इसको एमिली डिकिंसन ने। तो सबसे पहले इसके जो है ओवरव्यू देखते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट अर्ली पोइम है, अमेरिकन पोइट है जो एमिली डिकिंसन की 1859 में लिखी गई है। इट मेक्स द बोल्ड क्लेम दैट सक्सेस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु फेल। ऐसे लोग जो नाकाम होते हैं वो जीत का असल मतलब वही जानते हैं। एंड इलस्ट्रेट्स वजाहत की जाती है दिस क्लेम इस बात की बाय कंट्रास्टिंग अ विक्टोरियस आर्मी विद अ फॉलन सोल्जर फ्रॉम द अदर साइड। एक ऐसा सिपाही जो जीती हुई फौज का है लेकिन वो दुश्मन की साइड पे रह गया है, ठीक है, वहाँ पे वो गिर गया है, तो जो है वो ज़्यादा जानता है इस जीत का मतलब, ना कि वो फौज जो जीत गई है। द पोइम हैज़ the rare honor of publication during Dickinson's lifetime, 1864, though it was published anonymously of her approximately 1800 poems. Only a few were published during her life. ये नज़म जो है इसकी वफ़ात के वो बाद जो है वो पब्लिश हुई है। तो तकरीबन जो है 1800 पोइम्स हैं, जिसमें से चांदी हैं जो उसकी ज़िंदगी के दरमियान जो हैं वो पब्लिश हुई हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टैंज़ा बाय स्टैंज़ा। Success is counted sweetest. Success is counted sweetest by those who never succeed. Explanation है, people who always fail are the ones who appreciate success the most. वो लोग जो नाकाम होते हैं वो सिर्फ वही लोग हैं जो सक्सेस, कामयाबी को ज़्यादातर जो है मोस्टली ज़्यादा तौर पे वो अप्रिशिएट करते हैं, उसकी जो है तारीफ़ करते हैं, इस्ताइश करते हैं। To comprehend an actor requires sorest need. To truly value something sweet like success, you have to really need it. किसी मीठी चीज़ को हासिल करने के लिए पहले जो है आपको उसका जो तुर्श ज़ायका है उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए, फिर ही आप उस जो असल मीठी चीज़ है उसके आप हकदार हो सकते हैं। ये जो है वो 3-4 लाइन्स का जो है एक्सप्लेनेशन है। Not one of all the purple host who took the flag today. Not a single soldier in the army that won the battle today. कोई भी एक सिपाही ऐसा नहीं होता जो पूरी जंग जो है वो जीत के जो उसका जंग परचम है वो लहरा सके। Can tell the definition so clear of victory. Has a clear and understanding of the meaning of victory. As he defeated dying, as does our dying soldier from the opposing army. One whose forbidden air, the distant strains of triumph, burst agonized and clear. To this dying soldier's ears, the distant sounds of celebration ring out painfully clear. इसकी जो समरी है वो देख लेते हैं। The speaker says that those who never succeed place the highest value on success. They count it sweetest. To understand the value of an actor, the speaker says one must feel sorest need. She says that the members of the victorious army or the purple host who took the flag today are not able to define victory, as well as the defeated dying man who hears from a distance the music of the victors. ऐसा सिपाही जो शहीद होने वाला है, मरने वाला है, वो जो है वो उसके कानों में पड़ने वाली वो म्यूज़िक की आवाज़ है जो है जीती हुई फ़ौज की जो उसको सुनाई दे रही है, तो वो बहुत सिपाही है जो जीत का असल मानी समझ सकता है, ना कि वो आर्मी जो जीत चुकी है। द सीन इज़ set in this first stanza to dive into the core elements of success is counted sweetest. That basically you must fail to have something in order to truly understand its worth. Specifically for this stanza, only someone who has never succeeded will count success at the sweetest level, and only through need can a person comprehend an actor. By referencing the purple horse in this stanza of success is counted sweetest, Dickinson has brought royalty into the equation, since purple was historically a word that was connected to the rich and the royal. Given that these in purple are the ones who took the flag today, it seems fitting to assume that this is royalty whose army
has won a battle. Even though they are the ones who claim the flag, they don't understand the significance of what the ongoing struggle for it meant. In this, they cannot truly appreciate the victory. They cannot even tell the definition of it. So they will never fully appreciate the feelings of achievement when the battle is over. In the third stanza of Success is Counted Sweetest, the person who understands the battle victory in a clear fashion, according to this stanza, is the dying warrior who gave his life for the concept. The irony is that this victory is labeled as defeat to the point that hearing distant strains of triumph is noted as forbidden and agonized. This makes the understanding of what victory means a negative thing. In a way, only by truly suffering for it overall is the full effect of this sensation experienced. In this sacrifice and victory go hand in hand so much that one might find it hard to envy the person who truly grasps victory, as it does not necessarily seem worth its price. इसके बाद जो है इसका एनालिसिस देख लेते हैं. द मीनिंग ऑफ दिस पोइम इज एक्चुअली फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एज सो ऑफन विद एमिली डिकिंसन, the metaphors and analogies she chooses to illustrate the poem's message are perhaps a little less so. So first, our summary success is considered we are told by those who never succeed. In other words, the idea of success is most desired by those who never attain it. Think of fame or riches as examples of success in contemporary life. Many people who get them realize they don't provide constant happiness and are not as sweet as they appeared when they were out of reach and we were still striving for them. Dickinson then uses the example of nectar. Building on the idea of sweetness, she began the poem with bees go in search of nectar so they can make honey. And Dickinson suggests that those who crave the sweet substance understand it best. In other words, we appreciate the value of something only when we lack it. To offer a slightly less grand analogy of our own, anyone who has shopped while hungry or imagined a nice cold drink on a hot day knows that this is true. We are creatures of instinct. As soon as we have something, we cease to want it and our relationship to it changes. The fact that in English the word want is used to mean both a desire for something and a lack of something reminds us of how aware we are of this. In the second and third stanzas of her poem, Dickinson turns to the example of war and contemplates victory versus defeat. Those who are victorious in battle cannot fully comprehend how important it was to win, whereas those who are defeated and dying on the battlefield know all too well the price of failing to succeed. Dickinson turns from rather trivial or light-hearted examples. In that first stanza, we might read nectar not as a literal reference to bees, but as metaphor for wine, that sweet nectar which we humans enjoy for its taste and scent, to altogether more weighty and momentous matters for the rest of the poem. Success is Counted Sweetest is a poem about how those who lack something desire something the most keenly. But this would be a platitude if it were not for the added twist. Emily Dickinson gives the idea, namely that paradoxically those who have not experienced something understand it the best. As Victor Hugo put it, need of the immaterial is the most deeply rooted of all needs. One must have bread, but before bread, one must have the ideal. लास्ट पे इसके जो थीम्स हैं वो हम देख लेते हैं. सक्सेस है, लैक है, डिज़ायर है. सक्सेस इज़ वैल्यूड मोस्ट बाय दोज हु हैव इट लीस्ट. डिससेटिस्फैक्शन है, सफरिंग है, एम्बिशन है. तो ये हमारी आज की जो है वो पोइम थी, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन. आज हमने इसका जो है ओवरव्यू, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी, इसके एनालिसिस और लास्ट भी इसके जो थीम्स हमने वो डिस्कस किए हैं. बेसिकली जो पोइम का जो है वो उर्दू में आपको मैं इसकी वजाहत करूँ तो ये है कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा सिपाही जो दुश्मन की तरफ रह गया है या दुश्मन का सिपाही है, वो मौत के करीब है और उसके जो आखिरी सांसें चल रही हैं और उसके कानों में वो जो है साज़ों की और खुशी की जो लम्हात हैं या नगमात हैं या म्यूज़िकल कंपोजिशन है, कुछ ऐसा लिरिकल कुछ भी जो है वो खुशी के जो है वो चीज़ उसको सुनाई दे रही है.
तो वो जो है वो हारा हुआ एक लश्कर का सिपाही है, तो जो है उसको उस जीत की जो खुशी है उसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकता है कि जीत क्या चीज़ होती है, सक्सेस क्या चीज़ है। तो ऐसे लोग जो जीत चुके हैं, जो आर्मी जीत चुकी है, उसको इतना ज़्यादा वो उनको खुशी नहीं है। लेकिन जो वो सिपाही है, मुर्दा सिपाही, अब वो मरने वाला है, तो वो दुश्मन की तरफ है और वो मतलब मौत के करीब है, उसके कानों में जो आवाज़ पड़ रही है खुशियों की, तो वो जो है उस जीत का ज़्यादा मज़ा, वो टेस्ट वो समझ सकता है, ना कि दूसरे लोग। तो बेसिकली ये इसी पोइम का जो है वो मकसद था। तो आज के टॉपिक में हमने इसको थॉरली डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको इसके हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी जो है कीमती आरा का इज़हार कर सकते हैं, अपनी जो भी आपके दिल में है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और सोशल लिंक्स यूज़ करते हुए आप मुझे जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस को देखा करें, वॉच किया करें, शेयर किया करें लोगों के साथ, कमेंट किया करें और अपनी जो है मोहब्बत का इज़हार करें। इसके अलावा आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना, ताकि आपको हर आने वाली जो है वो वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश विद रहील सर के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।